हेलो, am I audible you clearly? सबको आवाज आ रहा है क्या? Okay. So we was discussing about the parental products, and we have seen in the morning lecture this chart, but still I want to repeat it. So air handling unit. Every company or every manufacturing premises has its own air handling unit, so that sterility will be maintained in the production area. Okay. So introduction of fresh air and removal of recycled air. So for such facility should be there, and air handling unit is present in every industry for this purpose. Now, high efficiency particulate air. What do you mean by high efficiency particulate air or HEPA? So, HEPA filters are defined as they are efficient in removing zero point 0.3 micron or larger size particle. At least they have efficiency of 99.97%. Okay, so efficiency of 99.97% to remove zero point 0.3 micron size or larger particle. Then integrity of HEPA filters or the quality of HEPA filters are checked by one test known as a DOP test, dioptyl phthalate test. Okay, and what is acceptance criteria for that? So from one side you have to pass the dioptyl phthalate, which is a volatile liquid. Okay, so its particles are near about the in the range of zero point 0.3 micron. So acceptance criteria, so HEPA filters can be called as a 99.97 efficient if the HEPA filters are able to remove the zero point 0.3 micron particle. Okay, and should not permit more than 0.03% of zero point 0.3 micron, and HEPA filters may be regarded as a 99.99% efficient if not more than 0.01% of particle size of zero point 0.3 micron is passed. Okay, मतलब 0.3, ये इसमें क्या है, 0.3 माइक्रोन का पार्टिकल रहता है। तो अगर कोई HEPA फिल्टर पास करता है पार्टिकल, उसको तो आइडियली उसने फिल्टर करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन अगर वो पास करता है लेकिन इससे कम करता है, 0.03% से कम करता है, तो उसको बोलेंगे 99.97 एफिशिएंट। अगर ज्यादा करता है, 0.01 तक ही करता है, तो उसको बोलेंगे 99.99%। ठीक है। देन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज क्लास 100 एरिया। So class 100 area is nothing but there not there should not be more than 100 particles per cubic feet of 0.5 micron. 0.5 micron के 0.5 माइक्रोन साइज के पार्टिकल या उससे ज्यादा साइज के पार्टिकल कितने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 100 क्यूबिक पर फीट। इतना अगर है तो उसको बोलेंगे क्लास 100 एरिया। एंड दिस क्लास 100 एरिया is aseptic area, and all the aseptic procedures like filling and other aseptic operations, they are carried out in this session, in this area, like filtration, filling, sealing, all that. Okay, then class 1000 area, likewise class 1000 area. So there should not have more than 1000 particle per cubic feet of zero point 0.5 micron size or more than that. So that is the class 1000 area. Class 10,000 area, class 10,000 area means, so same again, so 10,000 particle per cubic feet of not more than zero point 0.5 micron. So that is a class 1000 area. Class 1000 area is used for like it is known as a buffer area, and before doing a aseptic operations you have to do primarily operation in this area. We have seen this. We was here in the morning session. So personnel, so whatever personnel are there, those who are working, those might be a chemist, those might be a quality control analyst, those might be a QA personnel, etc, etc. So they should have good health and they should have regular checkup. ऐसा नहीं कि किसी को सर्दी खांसी आ रहा है और सर्दी खांसी है या फिर कोई इन्फेक्शन है और वो जाके प्रोडक्शन एरिया में वहाँ पे पेरेंटल में वो अपना सर्विस दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसका रेगुलरली हेल्थ चेकअप होता है और ही शुड बी हैविंग गुड हेल्थ। देन ही शुड कवर द होल बॉडी विथ स्पेसिफाइड क्लॉथ, स्पेसिफाइड अटर। ओके, सो जितने भी जो बोला है क्लॉथ्स, वो क्लॉथ्स ही उसने वेयर करना चाहिए। और
वो सब पहन के उसने अंदर जाना चाहिए प्रोडक्शन एरिया में पेरेंटल के, ठीक है। दे शुड टेक एयर शावर बिफोर एंटरिंग इनटू एसेप्टिक एरिया। कि एरिया क्या, ये तो कपड़े वगैरह तो पहनना ही है, बाद में एरिया में एंटर करने से पहले उसका एयर शावर लेना है। एयर मतलब क्या, जैसा अपना शावर होता है वैसे ही होता है, लेकिन वहां से सिर्फ एयर ब्लो होती है, जो वार्म एयर है वो फोर्सफुली ब्लो होती है, मतलब एकदम फोर्सफुली एयर ब्लो होती है, ताकि आपके जो भी एक्सटर्नल क्लॉथ्स वगैरह है तो उसके ऊपर जो भी है तो आपका निकल जाए वहीं पे, अंदर ना जा, ठीक है। So Darkan cloth is made up of a continuous fiber and which is a essentially lint free. So one more important factor here, those who are working in the aseptic area, they should wear a cloth which should be lint free. Lint means धागे, कपड़े के धागे जो निकलते हैं ना, वो धागे नहीं निकलना चाहिए. So the cloth of that chemist should be lint free. So dark on cloths are made up of continuous fiber and they are usually lint free. Remember, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. Now next part is different type of HEPA filters and their efficiency and use. So we have different HEPA filters over here. HEPA filter A, B, C, D, E. Okay, their applications are there and their efficiency. So we'll see one by one. So type A HEPA filters, they are used in the industry they are used in the industry for non critical operations. Critical operations means क्या, कि जहाँ पे आपका critical operations मतलब जहाँ पे aseptic filling हो रहा है, sealing हो रहा है. So it is used in the industry for non-critical applications like, and they have efficiency of removing zero point 0.3 micron particle, 99.97% efficiency of removing zero point 0.3 micron particle size. So HEPA filters type A. Now HEPA filters type B, so they are used to remove the nuclear contaminant. Nuclear contaminants means आपका न्यूक्लियर रेडिएशन जो होता है उसके लिए वो भी रिमूव करता है टाइप बी HEPA filters. Okay, so they have efficiency of removing 0.3 micron particle, that is 99.97 particle, 99.97% efficiently they can remove 0.3 micron particle, and also it is certified by DEO. DEO means it is just Department of Energy. Okay, so nuclear energy particularly. So nuclear contaminant 99.97. Then again type C HEPA filters are used in a laminar flow unit. So they are having 99.99% efficiency to remove the zero point 0.3 micron sized particles or more. ठीक है, कि laminar air flow में कौन सा होता है, जिसका efficiency होता है 99.99% to remove the particles of 0.3 micron. Okay, so it is a ordinary purpose. Type A is ordinary purpose. 99.97 जिसका efficiency होता है, ordinary purpose होता है. बाद में laminar flow में कितना होता है, laminar flow में जो, so whatever HEPA filters is present in the laminar flow unit, so that should have efficiency of 99.99% to remove the particle size of 0.3 micron. Then next one is type D. Type D is known as ultra low penetration air HEPA filters, ULPA. So they are very efficient to remove a particle size of 0.3 micron, that is 99.995. So these type D HEPA filter, so they are known as a ultra low penetration air ULPA. So they are able to remove 99.995% efficiency. They are removing 99.995% efficiency to remove your particle size of 0.3 micron. Okay. Then last type of HEPA filter, that is type E. So these kind of HEPA filters are, they are for they are used for they are used to stop the nuclear chemical and biological threat. न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल थ्रेट, अगर किसी कंट्री के ऊपर आपने केमिकल वेपन डाल दिया या फिर किसी कंट्री के ऊपर आपने न्यूक्लियर वेपन डाल दिया, तो वो जो रेडिएशन है, वो जो केमिकल वेपन है, केमिकल वेपन, उसका जो पार्टिकल्स है एंटरिंग जो अंडा, उसके उसको रिमूव करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए टाइप ई हेपा फिल्टर यूज करती है. So these are the types of HEPA filters. Okay,
Type E HEPA filters, type E HEPA filters, they are used to stop toxic nuclear, chemical and biological threat. So they are very efficient and they are able to remove 99.999% of particle size 0.3 micron. So ये जो पूरा HEPA filter है उसका याद रखो कि जो ordinary purpose HEPA filter है type A, so it is able to remove the particle size of 0.3 micron 99.97%. टाइप बी न्यूक्लियर कंटेमिनेट के लिए यूज करते हैं टाइप बी HEPA filter. So they are again able to remove 99.97 particle 99.97 efficiency. They also have same efficiency. Then laminar air flow में जो use करते हैं HEPA filters, they should have efficiency of 99.99 to remove the particles of 0.3 micron. Then your type D is nothing but the ultra penetration air ULPA. So they are able to remove 0.3 micron particle with the efficiency of 99.995%. Then type E, they are used to stop the toxic nuclear, chemical and biological threat. So they are also able to remove 99.999% particle of 0.3 micron. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 100%, ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली देख लो, मैंने तो ऐसे बोला है. देन types of area, class of area and their respective operation carried out in the parental formulation. ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. Class of area and class area, type of area. So class 100 area what क्या होता है, class B, class 10,000 area क्या होता है, 1000 area क्या होता है, ऐसा. So here I have grades A, B, C, D and area, name of area, class 100 area, class 1000 area, class 10,000 area, class 1 lakh area. Okay. So here class 100 area means what? So in this area there will be not more than 100 particles per cubic feet of 0.5 micron size और larger. कि ये क्लास 100 एरिया में क्या होगा कि इसमें सिर्फ 1 क्यूबिक फुट में कितना होगा पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब भी उसको क्लास 100 बोलेंगे. कितने साइज का, 0.5 माइक्रोन और लार्जर. So it is known as a aseptic area and it is used for aseptic filling and preparation. Then class B area or class B or grade B, it is known as a class 10 class 1000 area. Class 1000 area means what? So in this area the particles per cubic feet should be not more than 1000 particle, okay, of 0.5 micron or larger size. It is used for primarily for operation like primary operation of class 100 area. मतलब क्लास 100 एरिया में जो आपको ऑपरेशन करना है, मतलब जैसे मान लीजिए कि फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन करना है तो आपको फिल्ट्रेशन कहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे क्लास 1000 एरिया में. उसके बाद उसका फिलिंग, एसेप्टिक फिलिंग है वो कहाँ पे करेंगे, या फिर यहाँ पे आप प्री फिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब पहला फिल्ट्रेशन यहाँ करेंगे और फाइनल फिल्ट्रेशन यहाँ करेंगे. तो ऐसा मतलब इसके प्रिलिमिनरी जो ऑपरेशन होते हैं क्लास 100 एरिया के, सो दे आर कैरिड आउट इन द क्लास 1000 एरिया. Then class C, grade C, they are known as a class 10,000 area. So here in this area you will have 10,000, not more than 10,000 particles of 0.5 micron or more per cubic feet. Okay, so that is a class 10,000 area. So it is used for preparation of solution to be filtered. ठीक है, मतलब solution prepare करना है आपको, preliminary operation एकदम, उसके बाद में इसके लिए यूज करते हो. Then last is a grade D or class 1 lakh area. So here again, so the particles will be not more than 1 lakh per cubic feet of size of 0.5 micron or more. So it is used for handling of component after washing. So it is very important, you should be able to define the class of area, class 100, class 1000, class 10,000, class 1 lakh. Okay, then you should be able to match these values. Okay, so what is a industrial and non-critical operation HEPA filters, so they will remove which particle size etc etc. So laminar flow में कितना होता है, 99.99% efficient होता है to remove 0.3 micron particles. ये याद रखो आप, ये पूरा पहला स्लाइड और ये स्लाइड. Okay, now next is the methods of isotonicity calculations. How you can adjust the isotonicity of your parenteral product. Okay, so there are
Either you can see, I have told you 0.9% sodium chloride will be isotonic with your blood plasma. Okay, means whatever osmotic pressure that will be exerted by 0.9% sodium chloride will be the same as that of the blood. So that's why same osmo equivalent, they are osmo equivalent, so they are isotonic. Okay, so that is isotonic, they will have same osmotic pressure. Okay, so if osmotic pressure of any formulation is more than the osmotic pressure of blood, that is known as a hypertonic, and if it is less than the blood, it is known as a hypotonic. Okay, sometimes the term paratonic is used to indicate both hypertonic and hypotonic. Just remember, I'm not going to tell you each and everything, just remember. Yes. Okay, so then your 0.5% dextrose is also isotonic with your blood. Then there are the methods to calculate the isotonicity. So first method is your depression of freezing point or freezing point depression. Okay, so you can calculate the amount of drug to be added so that it will be isotonic with your blood plasma. Okay, so freezing point depression. It is a freezing point depression is a colligative property, and the added solute may affect the freezing point of may affect the freezing point. So that is usually depression. That is a depression. So that is a physical freezing point depression method. Okay? So freezing point of your blood plasma and tears, जो भी आपके blood plasma है और tear होता है आपका, उसका freezing point होता है -0.52. ओके, -0.52 याद रखो, यार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. उसके बाद solution which freezes at -0.52 degree will be having same osmotic pressure as that of the body fluid. Means कौन सा भी solution होगा अगर उसका freezing point ये है -0.52, so that will be isotonic with blood and other fluids. Okay, so there is one formula known as W is equal to -0.52 W is equal to -0.52 minus A divided by P. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द आइसोटोनिसिटी. ओके, इट इज यूज टू calculate the weight required of substance to be isotonic with blood plasma. Okay, so ये होता है आपका प्लाज्मा का freezing point. मतलब क्या, weight of adjusting substance required is a -0.52 minus A divided by P. A क्या है, B क्या है, मैं बोलता हूँ. W is nothing but the weight of adjusting substance, that is a gram per 1000 ml weight by volume in the final solution. Then A is nothing but the freezing point depression of adjusted hypostomatic solution, then hypoosmotic solution. Then B is nothing but the freezing point depression of 1% solution of existing substance. मतलब बहुत सारे जो भी जैसे कोकेन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, सो इनके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो करते उनका वैल्यू रिपोर्टेड होता है, सो A माइनस बी. अब ये जो B होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन A माइनस बी, मतलब एडजस्टिंग सब्सटेंस कौन होता है और आपका एग्जिस्टिंग सब्सटेंस कौन होता है. सो यहाँ पे मान लीजिए आपको कोकेन हाइड्रोक्लोराइड का आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना है, तो ये तो हो गया माइनस पॉइंट कोकेन का फिजिक पॉइंट डिप्रेशन डिवाइडेड बाय आपका NaCl. तो ऐसे करके आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितना है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा. सो इसके ऊपर कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है, बाकी कुछ नहीं. There are two methods to adjust the tonicity. Isotonicity adjustment के लिए दो methods है. First one is depression of freezing point, and second one is a sodium chloride equivalent method. So it has a formula: molecular weight of sodium chloride divided by I factor of sodium chloride into I factor of sodium chloride divided by molecular weight of adjusting substance. ये है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो बुक में से, लेकिन इतना कुछ नहीं, आपको सभी इतना याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है. बोथ आर द मेथड यूज्ड टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ ब्लड. ओके, आपको यहाँ पे इतना भी ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपका आरबीसी है, आरबीसी अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए कि आइसोटोनिक में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आइसोटोनिक मतलब सेम आइसोटोनिक प्रेशर। हाइपोटोनिक मतलब क्या, हाइपोटोनिक मतलब क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी डालेंगे तो आरबीसी के अंदर जो वाटर है वो बाहर पुल आउट होगा, सो इट विल गॉट श्रिंकिंग, आरबीसी विल श्रिंक इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड इफ यू put RBC in the hypotonic solution, there will be bursting. So RBC will absorb the water and it will get burst, फूट जाएगा। ये मालूम होना चाहिए आपको, इसके ऊपर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ये तो सिंपल है। कंपाउंडिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी इन एसेप्टिक कंडीशन, जो भी कंपाउंडिंग कर रहे हैं आपको, दैट शुड बी इन एसेप्टिक कंडीशन। देन फिल्ट्रेशन carried out by bacteria proof filters, for example like membrane filters, depth filters, we have seen in the pharmaceutical engineering, all this. Then now how the solution is filled into the bottles, or how the solution is filled into the vials and bottles. So there are two methods for filling, gravity filling is there and vacuum filling is there. Most of the time gravity filling is mostly used, gravitational filling. Sealing of ampoules. So for to seal the ampoule there are two methods, pull seal method and tip seal methods are there. So pull seal method you might have seen in your lab में आप देखो एम्पुल्स का फिलिंग करते हैं, बाद में एक बर्नर के नीचे रख के उसका टिप एकदम मेल्ट करते हैं और बाद में उसमें ब्लंट फोर्सेप्स से पुल करते हैं, so that it will be sealed properly. But pulling method is not used in the industry for production of ampoules. Tip seal method is used, tip seal method is used in the industry. Okay, so ampoules may be closed by melting the portion of glass at a neck, either bed seal or tip seal or pull seal. So pull seal is a laboratory scale method, but industrially tip seal method is mostly used. Okay, then number of container to be tested with respect to batch, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर इन बैच। ओके, कि आपने एक बैच बनाया 10,000 कंटेनर का, 10,000 इंजेक्शन का, तो उसमें कि कितने नंबर ऑफ कंटेनर आपको टेस्टिंग के लिए लेने, तो उसका ये चार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सो नंबर ऑफ कंटेनर्स टू बी टेस्टेड विथ रिस्पेक्ट टू बैच साइज, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर इन द बैच। सो नंबर ऑफ कंटेनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ टू बी टेस्टेड, नंबर ऑफ कंटेनर इन अ बैच। एक बैच में कितने कंटेनर है आपके, मे बी 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, मोर हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो कितना कंटेनर लेना चाहिए आपको टेस्टिंग के लिए। सो इफ योर बैच हैज नॉट मोर देन 100 कंटेनर्स, मतलब 100 कंटेनर का बैच बनाया आपने, उसमें का कितना कंटेनर आपको टेस्टिंग के लेना है। सो यू हैव टू टेक 10% ऑफ 100 और 4 कंटेनर्स, 10% और 4 कंटेनर, विच वट एवर इज मोर, सो यू हैव टू टेक 10%। अगर 5 आता है और कंटेनर आपको 4 है तो 5 लेना पड़ेगा। 10% अगर 3 आता है, कंटेनर 4 है तो 4 लेना पड़ेगा, ऐसा। which whatever may be higher value. If your batch has more than 100 but less than 500 containers in one batch, एक बैच में आपका 100 से ज्यादा है लेकिन 500 से कम है बैच में, तो you have to take 10 containers for testing, 10 containers. Then if your batch has a more than 500 containers, then you have to take 2% of that 500 or 20 container whichever is a less, जो जिसमें जो भी कम आएगा, मतलब 2% अगर 19 कंटेनर आता है तो 19 कंटेनर लेगा, अगर 2% अगर 21 आता है तो 20 लेगा, ऐसा। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स LVP सेम 2% और 20% कंटेनर्स whichever is a less. So this is how you have to choose the container for testing. Now last slide of this chapter, quality control test for parental products in additional to biological and chemical test. तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होता है आपका, मतलब अभी देखो आपका, अगर आप डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन बना रहे हो, डेक्सट्रोज 5% सलाइन सॉल्यूशन, या फिर मान लीजिए कि आप कौन सा भी एग्जांपल ले लो, डाइक्लोफेनेक सोडियम का एक 25 ml का एक वायल बना रहे हो आप, या फिर एम्पुल बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको केमिकल टेस्ट क्या होंगे, उसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा कि डाइक्लोफेनेक है या नहीं है,
उसके बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट होगा, उसके बाद जो रॉ एपीआई है उसका ऐसे होगा कितना परसेंट प्योर है, 99.98% है कि 99.99% है, 100% है। तो ये हो गए आपके उसके केमिकल टेस्ट, ठीक है। मतलब identification of substance, then taste for purity of that substance, then moisture content, then impurity test related substances. Okay, so these are the chemical tests. Okay, so quality control test for parental product in addition to जो chemical test तो routinely होता है वो तो अलग, लेकिन biological test जो होते हैं वो भी अलग, लेकिन उससे ज़्यादा कौन सा टेस्ट है? So quality control test for parental products in addition to chemical and biological test. So first one is a leaker test, leaker leakage test, leaker test or leakage test, leakage भी बोल सकते हो उसको. Suppose that you have made an ampoule, a batch of ampoules, and you don't know whether they are completely sealed or not. So you have to check it whether the ampoules being manufactured are completely sealed or not. To detect it whether they are incompletely sealed or not, then to detect the incompletely sealed ampoules. So tip sealed ampoules are more likely to be in the incompletely sealed. जो टिप सीलिंग होता है तो उससे उसमें क्या बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो completely सील ना हो, बंद ना हो. सो पुल सील मेथड जो है उसमें completely सीलिंग ऑफ एम्पूल्स होता है, बट पुल सीलिंग मेथड यूज नहीं करते इंडस्ट्री में. इंडस्ट्री में यूज करते हैं टिप सील मेथड. सो यू हैव to check, you have to check whether it is a completely sealed or not. Okay, to for that purpose you have to do one test known as a leakage test. It can be detected by producing a negative pressure within a completely sealed ampoules, usually in a vacuum chamber. Ampoules are submerged in the deeply colored dye solution. So methylene blue dye is used in a concentration of 0.5 to 1%. 0.5 को छोड़ो आप 1% याद रखो. 1% methylene blue is used to check the leakage test of your ampoules. ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था जीपैट में 2018 में, because of atmosphere. ठीक है, so you have to place your all ampoules in the vacuum area containing a solution of 1% methylene blue. Then you have to apply the vacuum because of the negative pressure development and difference in the pressure. So if your ampoule is faulty, if your ampoule is not sealed completely, so the methylene dye will go inside the ampoule and it will color the ampoule, so that you can easily understand whether it is completely sealed or not. जो भी इनकम्प्लीट सील है वो निकाल के बाहर फेंक लो, चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है. Now, alternatively, there is alternate method. Same, you have to use 1% methylene blue dye. So, all ampoules are submerged in the 1% solution of methylene blue dye and it can be subjected to autoclaving. एक autoclave करो उसका, अगर एम्पूल के अंदर ब्लू कलर आता है तो मान लीजिए कि वो इनकम्प्लीट सील है. So alternatively, ampoules can be submerged in a dye solution and can be subjected to autoclaving to detect the leakage test. Okay, so vials and bottles are not subjected to this test. सिर्फ एम्पूल्स के लिए होता है लीकेज टेस्ट, याद रखो. वाइल्स एंड बॉटल आर नॉट सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि वाइल में क्या होता है, वाइल में रबर क्लोजर होता है. सो दिस वाइल्स एंड बॉटल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू दिस टेस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रबर क्लोजर. Then next one is a clarity test. Clarity test. So according to USP, all containers must be inspected visually for whether there is a viable particles are there or not. Okay, so according to USP, all containers to be visually inspected that with viable particles must be discarded. अगर उसमें कुछ आपको दिख रहा है particles वगैरह आपकी आंखों से तो आपको वहाँ उसको फेंक देना पड़ेगा. Now, in addition to large volume parentals, the USP has established a limit of 50 particles of 10 micron and larger and 5 particles of 25 micron and larger per ml. इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि what is the limit of 15 particles, oh sorry, what is the limit of 10 micron particle in the clarity test? So it is a 50 particles and 5 particles of 25 micron or larger per ml. So visual inspection is done against the black and white screen. वहाँ पे देखो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होता है, उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट लाइट लगा होता है और वहाँ पे आपको आपको सामने रख के बॉटल चेक करना पड़ता है whether there is any black particles or not.
बिकॉज ठीक है क्लैरिटी पर्टिकुलरली अभी तो आजकल तो कम होता है ये, लेकिन पहले ज़माने में जो बॉटल्स आते थे, ग्लास के बॉटल्स, और उसको ये रहता था क्या, रबर क्लोजर, तब जाके उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आते थे। आजकल तो कैसा है, डायरेक्टली प्लास्टिक का कंटेनर आता है, जो भी लार्ज वॉल्यूम प्रिंटर्स है उसके लिए, तो उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं आता। देन एक्टिव कंटेंट, सो एक्टिव कंटेंट कितना है, अगर D5 बनाया है आपने, टेक्सटोज 5%, उसमें 5% टेक्सटोज है कि नहीं ये चेक करना है। इट इज यू कैन डिटरमाइन द एक्टिव कंटेंट बाय chromatographic technique like HPLC or gas chromatography, that is another part. Then content uniformity, so it should be within the 80 to 115% of label claim, मतलब अगर आपका लेबल क्लेम कितना है, मतलब आपके इस फॉर्मुलेशन में अगर डाइक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक है डाइक्लोफेनाक है आपका 10 मिलीग्राम पर 5 ml, ठीक है, तो 5 ml में आपका 10 मिलीग्राम आपका लेबल क्लेम होगा, तो उसके लेबल क्लेम से 80 to 115 उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही रहना चाहिए। So it was all about the parental product. Now we'll see few important. We'll start our jurisprudence also. So just 1 minute. I will save it once.